back, students, to standard 9th maths chapter 6 lines and angles, and we are in the 8th session. Okay, in previous 2 sessions we learnt or we solved few illustrations, correct, theorems, and we saw even the axioms. We'll continue with the example. We solved so far 4 examples, that means 4 illustrations. So we move on to the 5th illustration now. Alright, now what is the statement? If a transversal intersects 2 lines, if a transversal intersects 2 lines, वो parallel नहीं है, alright, such that the bisector of a pair of corresponding angles, bisector of pair of corresponding angles are parallel. Children, let's pick up the bisector. Okay, ये 2 लाइन parallel नहीं है, उसको प्रूव करना है. आगे देखो, then prove that lines are parallel. This L and M are parallel. वो प्रूव करना है. And what is given? Bisector of corresponding angles are parallel. I won't be writing the number now because you can sometimes, if we need, we can write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not writing number in this example. Now you can very easily detect which are corresponding angles. So you can say this and this, they are corresponding angles, or even this and this, this and this, this and this. 4 pairs of corresponding angles are there. I chose one pair, angle EPB and angle PQD is a pair of corresponding angles. Now uska bisector, they are parallel. Bisector पता है ना children? Do you know what is bisector? It divides the angle into 2 angles of equal measure. So I am putting that symbol. Alright. Now ये next angle का bisector. Children, be careful. This is bisector of this angle. Alright. That symbol shows the rays are bisectors. I'll have to give some name. Now this is, say, suppose ray PX. And this is ray, alright, I'll give something else, A, B, C, D, P, okay, that is R, and this one is S, P, Q, R, S, alright, so ray PQ is bisector of angle EPB, ray QS is bisector of angle PQD, angle EPB and angle PQD is a pair of corresponding angles, their bisectors are red rays, which are parallel. We have to prove that L is parallel to M. कैसे prove करेंगे L is parallel to M? How? When are the 2 lines parallel? हमारे पास बहुत सारी conditions है. In a pocket or in the box or in the bank account. है क्या नहीं? When are the 2 lines parallel? If corresponding pairs are equal, then lines are parallel. If alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. है क्या नहीं? देखा क्या नहीं? If interior angle on the same side of transversal are supplementary, then the lines are parallel. तो यहाँ हमारे पास ये red वाला corresponding angle ही है. So if we succeed in showing angle EPB is equal to angle PQD, that means corresponding angles are equal. Then L will be parallel to M. कैसे बताए? How to show? We'll see. Okay? Let me write the data first. यहाँ लंबा data होने वाला है children. It's going to be quite lengthy. T is transversal of lines L and M. T is transversal of lines L and M. Ray PR and ray QS are bisectors of corresponding
angles, angle EPB, angle EPB and angle PQD, angle PQD respectively, such that the rays are parallel. PR is parallel to QS. ये जो bisectors है they are parallel. To prove L is parallel to M, L is parallel to M. ठीक है, कैसे प्रूव करें? Children, first I start with this. Ray PR is bisector of angle EPB. Proof. Please, देखो. Ray PR is bisector of angle EPB by data. So what is the definition? Therefore, angle EPR is equal to angle BPR is equal to half of angle EPB, half of angle EPB, result 1 by definition of bisector. Children, it's going to be very interesting. Pay attention. Since I have not given the numbers, you will have to concentrate on the figure. Alright? So this angle equal to this angle equal to half of whole angle. Clear? Similarly, यहां मैं similarly word use कर देता हूं. Similarly, we have, बताइए, angle PQS. Angle PQS is equal to angle DQS. Angle DQS is equal to half of whole angle PQD. Angle PQD. Result 2. वही definition. Similarly लिख दिया है. So this equal to this equal to half of whole. This equal to this equal to half of whole. All right. Now look at the parallel lines. इसको मैं थोड़ा सा extend कर दूं पीछे. All right. The red lines are parallel. और ये transversal, अभी इसको भी red कर देता हूं green. Green line को red कर रहा हूं मैं. वो उसका transversal हुआ. The two red lines are parallel and the red line T is transversal. तो ये एंगल देखो चिल्ड्रन, ये रेड लाइंस के बीच, रेड और रेड के बीच, ऑन द सेम साइड, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, ये भी कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स है, है कि नहीं? आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? देखो अब ये ग्रीन लाइन को भूल जाओ. यू सी दिस टू रेड लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल विच इज ऑल्सो रेड. तो ये और ये, those two angles are corresponding angles, and ये line तो parallel है, so corresponding angles are equal by axiom. Okay, लेकिन मैं पहले लिखूंगा T is transversal of PR parallel to QS. वो तो parallel है, PR parallel to QS by data. Therefore corresponding angles are equal. वो कौन सा है? EPR. Therefore angle EPR is equal to angle PQS. Angle PQS by axiom. Children, somewhere you have EPR. ये रहा. Somewhere you have PQS. ये रहा. Either you can substitute this or this, but हमें इसकी जरूरत है. Therefore, angle EPR की जगह पे लिखेंगे half of angle. This is angle EPB. That is equal to. इसकी जगह पे लिखेंगे
हाफ, इसकी जगह पे लिखेंगे दिस, हाफ ऑफ एंगल PQD by 1 and 2, by 1 and 2. Children, both sides half is multiplied, it cancels. Therefore, angle EPB is equal to angle PQD. Hey children, देखो angle EPB ये वाला एंगल, PQD ये वाला एंगल, they are corresponding angles, i.e. corresponding angles formed by transversal T of lines L and M are equal. ये इक्वल है corresponding angles. ये जो रेड वाले हैं they are corresponding angles formed by transversal of line L and M. और ये जो ब्लू वाला हमने लिखा है they are corresponding angles formed by transversal T of red lines. Okay, therefore those lines, green lines, are parallel. Therefore L is parallel to M. Proved by theorem. नंबर नहीं याद है तो नहीं लिखेंगे. It is actually theorem 6.3. Okay, fine. Anyway, did you understand? Sure. Children, now इसका converse भी true है. Suppose green lines are parallel. यहां 2 parallel lines दे देते. यहां 2 parallel lines दे देते. All right. Then this will be parallel. If green lines are parallel, then red lines are also parallel. I mean, the bisectors of corresponding angles are parallel. So, this can be asked as true or false statement. जो मैंने अभी कहा, converse. If transversal of 2 parallel lines is given, then bisectors of corresponding angles are parallel to each other. True. Bisectors of corresponding angles are perpendicular to each other. False. Bisectors of corresponding angles form a line. False. Because they are parallel, distinct parallel lines. Chaliye. Next we'll see those figures. With figures, let's try to understand. We don't have to prove them, but we have to understand them well for answering true or false statement correctly. So are you ready? All right, children. We'll see some more results. Okay? डरना मना है. 7 figures, 7 results. All right? But we'll try to understand how we are getting that. ये 7 true or false statement के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग. All right? So let us see. First one. The lines are parallel. The lines are parallel, or we are going to see bisectors of pairs of angles formed by transversal of parallel lines. Pairs of angles formed by transversal of parallel lines. 7 types of pairs of angles are formed. ये एक addition है, alternate exterior angle. 6 तो हमने बहुत डिटेल में देखा था. इसके बारे में भी आपको बताया था. We'll see it again. Okay? तो उसके bisectors, वो pair of angles के bisectors, how are they? They can be 3 types. दोनों पैरेलल हो सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं, and दोनों a pair of opposite rays. That means forms a line. Let's see what happens. Corresponding pair of angles. So let me choose one, children. ये रहा. All right? यहाँ corresponding pair of angles मैंने choose कर ली. एक ही choose करेंगे. Actually there are 4. ये और ये, this and this, they are there. But I am choosing one. Alternate pair of angles. All right? Alternate side. They are on the alternate side. Interior alternate pair of angles. Okay? Actually, यहाँ double bar लिख दिया मैंने. Anyway, I'll write here.
इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये निकाल देता हूं. ऑलराइट, so what I had written, interior angles on same side of transversal, वो रहेगा. ओके, चलिए, इंटीरियर ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, कोई भी एक चूज करता हूं, ये और ये, दे आर इन द इंटीरियर और ऑल्टरनेट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. वर्टिकली ऑपोजिट कोई भी एक चूज करता हूं, ओके, ये और ये, one pair of vertically opposite angles are chosen. Alternate exterior pair, exterior ऊपर और दोनों नीचे, ये दो और ये, लेकिन alternate side, alternate, तो एक ये बाजू से तो दूसरा ये बाजू से. This is pair of alternate exterior angles. ये pair of alternate interior, दोनों इंटीरियर में और alternate side, ये दोनों एक्सटीरियर में और alternate side. Okay, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, आप इसको ले सकते हैं, दे आर इंटीरियर ऑन द सेम साइड, एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड. लेट्स टेक दिस टू, दे आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये दोनों एक्सटीरियर है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. एंड देन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आपको पता है, ये और ये सिलेक्ट किया. There are 8 linear pairs. I chose one. There are 2 exterior pair of angles on the same side of transversal. 2 interior pair of angles on the same side of transversal. 2 alternate exterior angles on the same. 2 alternate exterior angles. 4 pairs of vertically opposite angles. 2 interior alternate angles. या alternate interior pair of angles and 4 corresponding pair of angles. Now what shall I do? ये सब के बाइसेक्टर्स ले लेते हैं. इसका बाइसेक्टर ड्रॉ नाइसली, बाइसेक्टर के जैसे दिखना चाहिए. This, so this angle and this angle is equal, correct? और इसका बाइसेक्टर ये दोनों एंगल इक्वल है. How are the bisectors of corresponding pair of angles? फिगर को देख के बोलो, पैरेलल, करेक्ट. अभी प्रूव करेंगे यहां. चिल्ड्रन, सपोज दिस इज x and this is also x. This is y and this is also y. Bisect हो रहा है, करेक्ट. तो what is measure of this angle? ये एंगल का मेजर कितना है? 2x है कि नहीं? और ये एंगल का मेजर कितना है? 2y. ऑलराइट, इसको कह दो एंगल नंबर 1 और इसको कह दो एंगल, ओके, हमारे नंबर जो आते हैं 1 2 3 4, ये 5. सो एंगल 1 इज 2x और एंगल phi is 2y. 1 and phi are corresponding pair of angles. So what is measure of angle 1? X plus x 2x. What is measure of angle phi? Y plus y 2y. अब देखो चिल्ड्रन प्लीज, ये दोनों पैरेलल है. This one and this one, they are parallel. And this one is transversal, so ये corresponding pair of angles equal है. So angle 1 equal to angle 5 is transversal of parallel lines L and M. So angle 1 equal to angle 5. लेकिन angle 1 is 2x. देख लो, angle 1 is 2x और angle 5 is 2y. 2 cancel. So x is equal to y. अब देखो बराबर, सी प्रॉपर्ली, x इक्वल टू y. तो आप ये अभी ब्लू लाइन को देखो, ब्लू लाइन को देखो और ये ट्रांसवर्सल देखो. तो ये एंगल और ये एंगल, ये x है और ये y है, बट x इक्वल टू y, ये हमने प्रूव कर दिया.
x equal to y. Alright, so ये angle और ये angle corresponding angles, they are equal. So these lines are parallel. I hope you have understood. True or false statement आपको बोलना है, वो तो फिगर ड्रॉ करेंगे, आपको पता चल जाएगा. चलिए next. Now I have got alternate interior pair of angles. These lines are parallel. उसके bisectors लेने हैं. This, if this is x, this is also x. Be careful. और ये दूसरा एंगल का बाइसेक्टर ले लो. If this is y, this is also y. Children, ये दोनों lines parallel है. I'll erase this now. I'll erase this. Please pay attention. ये हमारा एंगल नंबर 1, 2, 3, ये एंगल नंबर 4 होगा. 5 और ये एंगल नंबर 6 होगा. So angle 4 equal to angle 6 because they are alternate interior angles made by transversal of parallel lines. So angle 4 equal to angle 6, but angle 4 is 2x or angle 6 is 2y, y plus y. 2 cancel, so you got x is equal to y. आपको क्या मिला? x is equal to y. Observe nicely. ये x और ये y, ये x ही है कि नहीं और ये y है कि नहीं. आप देखो ये ब्लू लाइंस और ये ग्रीन लाइन ट्रांसवर्सल और ये ब्लू लाइन, उसके बीच ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट पेयर बनेंगे नहीं. बट x इक्वल टू y, दैट मींस ऑल्टरनेट पेयर्स आर इक्वल. x इक्वल टू y, ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मींस ऑल्टरनेट पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल. उसका मतलब द ब्लू लाइंस आर पैरेलल, मतलब द बाइसेक्टर्स ऑफ alternate pairs of angles are parallel. हो गया? फिगर देखते ही पता चल गया था कि पैरेलल है. अब नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स. ऑलराइट, ब्लैक कलर से मैंने दिखा दिया है. उसका बाइसेक्टर लेंगे. लेट्स टेक द बाइसेक्टर. ऑलराइट, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंगल. ये एंगल ओके, एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2, ये एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4 होगा. करेक्ट? ओके. बट बिकॉज दिस इज बाइसेक्टर, लेट मी से दिस इज x, तो दिस इज आल्सो x. अब इसका बाइसेक्टर सेकंड एंगल का, ठीक है, इसको y कहूं तो दिस इज आल्सो y. बट आपको पता है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अब 4 इज व्हाट? y प्लस y, 2y. Angle 2 is what? X plus x, 2x. 2 cancel. So x is equal to y or y is equal to x. अरे चिल्ड्रन, ये x है, ये x है और ये y है ना. Look, they are equal. उसका मतलब कि ये ब्लू भी लाइन है और रेड भी लाइन है. Vertically opposite angles are equal. That means two lines are intersecting in one point. So blue is also line. So this rays, blue ray and blue ray, which are bisectors of vertically opposite angles, form a pair of opposite rays or it forms a line. आपको ये समझ में आए ना आए, आप फिगर ड्रॉ करके ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट करेक्टली आंसर कीजिए. Is that clear to you? So we move on to the next one. Okay, number 4. वो क्या है? Alternate exterior pair of angles. Alternate exterior pair of angles. तो ये वाला ब्लैक, उसके मैं बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर देता हूं. x, तो ये भी x, तो पूरा 2x होगा. इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, ये बाजू जाएगा. y, तो ये पूरा 2y. अब देख लीजिए दोनों रेस को. हाउ आर दे लुकिंग? perpendicular to each other, forming opposite rays, means one line, or they are parallel? Yes, they are parallel. आप इसको extend करो, इसको extend करो, you will find that they are parallel. Is that clear to you? चलिए children,
ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं? दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो ये पूरा वाला एंगल और ये पूरा वाला एंगल, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. इफ दिस इज 2x, दिस इज ऑल्सो 2x. अब ये एंगल और ये एंगल, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दे आर इक्वल. ये 2x है और ये 2y है, they are equal to cancel. So here also you are getting x equal to y. Yeah. Now look here. This is transversal. This is line. This one is line. तो ये और ये, हाँ ये a है ही टोटल. चिल्ड्रन ये तो ऑल्टरनेट पैर है ही. So a plus x होगा और ये a plus y. But x equal to y. So a plus x कहो या a plus y कहो, both are equal. So alternate pairs are equal, so they are parallel. Whether you understand this or not, आपको ये याद रखना है true or false के लिए. Now, bisector of this angle and this angle, ये small a, ये small a, ये small b, ये small b, because they are bisectors. How are the bisectors? They are intersecting and intersecting at right angle, they are perpendicular. अभी प्रूव कर देते हैं. Children, ये एंगल और ये एंगल, interior angles on the same side of transversal, they are supplementary. अभी what is measure of this angle? 2a. What is measure of this angle? 2b. दोनों का total 180. So 2 is common, a plus b is equal to 180. 2 ones are 2 90s are. So what is a plus b is equal to 90. अब you focus in this triangle. अब देखो ये ट्राइंगल में फोकस करो. इसमें ये एंगल और ये एंगल a और b है. But what is a plus b is equal to 90. यहां से a plus b is 90. So what is measure of third angle? 90 plus what is 180? 90. So measure of this angle will be 90. So we can say the bisectors of interior angles on the same side of transversal are perpendicular to each other. उसी तरह इसका, this is bisector small x, इसका bisector small y. All right, but bisectors, how are they? Are they parallel? No. Are they intersecting? Yes, but if they are extended backward, children, पीछे उसको extend करेंगे तो, और you can see they will meet at right angle. उसको प्रूव करना है तो कर लीजिए. चिल्ड्रन, इसका और इसका टोटल मेजर, ये 2x है और ये 2y है. Exterior angles on the same side of transversal are supplementary, so total is 180. So यहां से 2 कॉमन निकालो, so ब्रैकेट में x plus y, that is 180. 2 ones are 2 90s are, so x plus y is equal to 90. तो x plus y is equal to 90 मिला. अभी देखो ये और ये they are intersecting each other. Alright, तो ये एंगल x है तो this is also x. ये एंगल x है तो this is also x, तो ये x. ये एंगल इस वाला y है तो this is also y. Now you know x plus y is equal to 90. अभी ये ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया, उसमें x plus y is 90. So measure of third angle is 90. So they are perpendicular. Last but not the least, linear pair. इसका बाइसेक्टर यहां, इसका बाइसेक्टर यहां. How are they? They are also perpendicular. They are also perpendicular. ये जरा मुझे सीधा ड्रॉ करना चाहिए था. बाइसेक्टर ऐसा दिखेगा. प्रॉपर बाइसेक्टर लगना भी चाहिए ना, बाइसेक्टर है. सो दिस इज ए बाइसेक्ट हुआ ये, और ये बी और ये बी. आपको पता है ये 2a है और 2b है, एंड लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री. टोटल मेजर इज 180. तो आपको x plus y इक्वल टू 90 मिल जाएगा. यहां a plus b इक्वल टू 90 मिलेगा. 2a plus 2b is equal to 180. So 2 times a plus b is equal to 180. So a plus b is equal to 90. ये देखो, ये ब्लैक रे और ब्लैक रे दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म करता है a plus b,
and A plus B is equal to 90. So they are perpendicular. See how they are perpendicular, how they are parallel, or how they form a line. If you did not understand, don't worry. But for true or false, the bisectors, आपको जो blue line दिखाई दे रही है, the bisectors of corresponding angles of transversal of two parallel lines are perpendicular to each other. True or false? False. They are parallel. All right. check. The bisectors जो आपको blue line दिखाई दे रही है, the line बोलूं, ray बोलूं, line segment बोलूं, you have to understand. जो blue line दिखाई दे रही है, they are bisectors of alternate interior pair of angles formed by transversal of two parallel lines are parallel to each other. Yes, true. Check. This. The bisectors of pair of vertically opposite angles formed by transversal of two parallel lines are parallel to each other. False. Therefore, they are opposite rays. This one. Bisector of alternate exterior pair of angles are parallel to each other. True. Bisectors of interior angles on the same side of transversal are perpendicular to each other. True. इस बार green lines है. Green lines. The bisector of exterior angles on the same side of transversal are parallel to each other. No, they are not parallel. They are perpendicular to each other. Next, the bisectors of linear pair of angles formed by transversal of parallel lines are perpendicular to each other. Yes, they are perpendicular to each other. So this true or false statements should be known very well. I'll give you one idea now. Direct जो आप देखना चाहते हो, ये आप जो corresponding pair की बात कर रहे हैं, they are equal. If these lines are parallel, they are equal. जो interior alternate pair of angles, they are also equal. Vertically opposite angles वो थोड़ा अलग सा पड़ता है, वो भी equal है, लेकिन उसमें अलग सा पड़ता है. Alternate exterior angles, they are also equal. Children, except the vertically opposite angle. जहां जहां pairs of angles equal है, उसके bisectors parallel है. सिर्फ vertically opposite में parallel नहीं है, straight line. और जहां ये interior angles, they are supplementary children, not equal. वो supplementary है, supplementary है. This also supplementary. Exterior angles, they are supplementary. है कि नहीं? और linear pairs, they are also supplementary. So जो भी pair supplementary pair बनाता है, their bisectors are perpendicular to each other. और जो pairs of angles equal है, their bisectors are parallel to each other, except pair of vertically opposite angles. Is that clear to you? I hope you have understood. So see you soon. We'll be back